हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफ इंडिया। एक सेपरेट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ए शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफ इंडिया। सो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग अ ग्रेट emphasis but put on the process of colonization and attempt towards the motor record and a strong resistance of masters and colonized societies. Masters means what? Strong resistance of masters means what? That the people, the country, who are the ruler, that means the domination rule of any country. It deals with the literature written in colonized country about the suffering of the masses. Suffering of the masses means suffering of the people, suffering of the common people that belongs to the particular area, particular country, and about the persistence of people who were the receiving at the end. One more thing, that post-colonial writer engage themselves in opening the possibilities of new language. Possibilities of new language and a new ways of looking forward the world. न्यू जो लैंग्वेज थी, न्यू जो वेज थे, उसके टूवर्ड्स इन्होंने काम किया। देयर राइटिंग्स कैन बी टेकन इन द मीडियम ऑफ रेसिस्टेंस इन द फॉर्मर colonizer. Their themes focused on the issues like identity, racial and cultural heritage. The themes are very important. That themes are identity, national and cultural heritage, hybridity. Hybrid. The word hybrid means what? That make something new breed from outer one. So hybridity, partition, contemporary reality, human relationship and emotion, these are the main themes during the post colonial time period of Indian literature. The rise of Indian literature writing in post colonial era was a significant development in indian england Indian English literature. द राइज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एरा, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, चीज़ें बनी और चीज़ें आगे बढ़ी विद न्यू थीम्स एंड टेक्निक्स। नई नई चीज़ें आई, नई नई टेक्निक्स आई। द लिटरेरी वर्क ऑफ कॉलोनाइजल नेशनलिस्ट पीरियड रिवॉल्व अराउंड थीम्स लाइक, कौन कौन सी थीम्स थी? मार्जिनलाइजेशन, विडोहुड एंड विडो मैरिज, रीमैरिज। विडो रीमैरिज मतलब विधवा और विधवा की जो दोबारा शादी है, बिकॉज ऑन दैट टाइम द सिचुएशन आर लाइक द इन इंडिया so many rituals. In the name of rituals, people are belonging to other, और कभी कास्ट के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी विमेन एंड मैन के नाम पे। सो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे, अब जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी वही यहाँ पे हाईलाइट की गई। जैसे कि मार्जिनलाइज्ड मीन्स व्हाट? अ कैटेगरी ऑफ पीपल इन एनी प्लेस that some people don't allow to sit together, to eat together and to celebrate together. जैसे कि अनटचेबिलिटी है, कास्टिसिज्म है, तो इसलिए बोला गया। विडोहुड, जो विधवा की लाइफ थी, उससे रीमैरिज आज की डेट में बहुत इजी है, बट ऑन दैट टाइम रीमैरिज, विडो रीमैरिज इज़ वेरी क्रूशियल, और इतनी चीज़ें नहीं होती थी, और उनके ना तो शादी करने वाले तैयार होते थे, और विडो को एज ए, यू कैन से, एज ए स्लेव और एज ए एनिमल ट्रीट किया जाता था। इट वॉज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हु हैज़ द फर्स्ट टाइम सो टू ब्रिंग नेशनल मूवमेंट इन हिज नोवेल आनंदमठ दैट वॉज पब्लिश इन 1882। आनंदमठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक तरीके से फर्स्ट टाइम इस चीज़ को हाईलाइट किया था। ये नोवेल आपको याद रखनी है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, बल्कि अगर बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर एंड टैगोर्स गोरा, इन सब ने ही क्या किया, कॉलोनियल पीरियड पे अपने वर्क को लिखा और रीडर्स को एक ट्रू पिक्चर, ट्रू रियलिटी प्रेजेंट की ऑफ इंडियन लैंग्वेज और इंडियन पीपल और इंडियन सोसाइटी, कल्चर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर यू कैन नो एवरीथिंग रिगार्डिंग एनी प्लेस, एनी कंट्री, एनी स्टेट. Now, the entire history of Indian language novel can be broadly be divided into two periods: pre-independent period and post-independent. So there is a difference between pre-independence period and post-independence period. तो इन दोनों में डिवाइड किया गया. It begins with the publication of Bankim Chandra Chattopadhyay का Rajmohan's Wife in 1864. Most of the novelists of the period like Bankim Chandra Chattopadhyay, Rabindranath Tagore, Raja Rao wrote many under the influence of Gandhism and nationalism, because during this period, Gandhism and nationalism are the movements, और यू कैन से थॉट, विचारधारा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लोग इससे, तो अपने
राइटिंग वर्क में इसको एक्सप्लोर करते थे. एंड दे एक्सपोज्ड मीन्स टू इलाबोरेट, to write the reality. And exposes us like social evil included widow situation, women, casteism, racism. These are the social evils. Customs and tradition mean rites and rituals, poverty and literacy. So these are the main themes, you can say the main exposure that the writers use to elaborate their literature or their work, their poetry, prose, drama, play and novels, right? So the social evil, custom and tradition also, some traditions are good and we have to follow that, but all tradition are not as the same. Kuch tradition hai like widow remarriage is just kind of tradition that widow have no right to marry again. But after the struggle of few people, that India got the right to the remarriage of widows, and right now it's on the way. Rights and rituals and poverty. Poverty is also because in the rural areas of India right now also, the ratio and the people, the income are in danger zone. And illiteracy means hota hai anpadta. Literacy rate of India is right now is also not 80 to 90%, is also in 70s. And on that time, the pre-independence and post-independence era, the illiteracy are spread up in the rural areas is like mushrooms. Now, bonds and bondage in the novels on one hand, and another hand they made writing and a powerful medium to highlight the East and West encounter. One side the writer wants to elaborate the situation, and another side with the help of literature he or she spread the area, the casteism, the racism, the exposure, social evils, custom to one part of the country to the another part. With the help of their work, with the help of their literature, with the help of their play, novel, poetry, prose, etc. Now, but a paradigm shift took place in the post independence. अब प्री इंडिपेंडेंस में यही सब चीज़ें थी जो अब तक हमने डिस्कस की, बट नाउ द टाइम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, बोथ इन टर्म्स कंटेंट एंड स्टाइल्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. नॉवलिस्ट जैसे कि मुल्क राजा आनंद जी ने लिखा, क्या लिखा उन्होंने, डीलिंग विद सोशल लेवल्स, एक्सपॉइजन, अनटचेबल लिखा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. एंड अनटचेबल वो पब्लिश इन 1935, कुली 1936, Two Leaves and a Bud 1937, and The Village was published on 1939. These are the milestone in Mulk Raj Anand's journey of social reformer. He proved as a social reformer. This work are very important: Untouchable, Coolie, and Leaves and a Bud, and The Village. So you have to remind at least two. Now, the time of women writers. Women writers in the post-colonial Indian have created a literature of their own. So they to put placing women in the context of changing social scenarios. Social scenarios को change करने के बाद the specially concerning upon the psyche of the women. True supremacy of the patriarchal value system by surrendering meekly to the tradition, assigned roles. Assigned roles means क्या होता है? Patriarchal society means what? A society that made few rules, few work and classified work according to the what? According to the gender. You know that gender is a social constructed word. Sex is given by God and gender is constructed by the society. So men and women को लेके कुछ work they have decided, like women have to cook and to wash utensils and to take care of home, and men have to go office, this and that, and money, this and that. So these are the social rules that constructed by the society according to the general, and this is called patriarchal values or patriarchal system. And one more thing, that patriarchal means the head of the family is a male and everyone have to listen him and work according to him. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसी मेल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हों और वही सुप्रीमेसी में हो. अब चाहे उसके अंदर IQ हो या ना हो, बट यू हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ रूल विच एवर मेड बाय द मैन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली. तो पेट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं.
यहाँ पे ट्रेडिशनली असाइंड रोल मीन्स है, ट्रेडिशनली असाइंड रोल मीन्स दैट women have to cook and men have to earn money. These are a traditionally assigned role, but nowadays things are changing day by day, that women are earning money and they are take care of their kids and home, etc., and man is also cooking, washing utensils. So these are the changes from that era to present era, and we are talking about the pre-independence era and post-independence era. So I think we have done it. Okay, but increasing education, better job opportunity, and awareness of night and privileges of women have to force her to contemplate. Indian women today are exposed to a new set of values with education and economic independency put them in the rather than confliction and desires. On that time, the situation of women are not good. Like they are not so educated. Almost they are packed in their homes. You can say dorms. But now the education system are changed and the situation of women are good now. They are educated than more than men and work, they step out with the man. So same चल रहा है. Women writer have called the Indian women in flux and have portrayed with the realistic both psychologically as well as physically in their novel. So psychologically means the way that any people think, and physically is a body related, is a body structure related. Now, women as a subject matter in Indian fiction in the English is not something recent, but the approach of novelists in certain novels in 1960s की अगर हम बात करें तो कुछ fiction work लिखे गए जिसमें idea and creatures having different values, no concept and revolves rather novel portray women as educated and conscious of their right. आज की women conscious है और educated है and demanding proper place in the society and also demands a proper place in the society and equality with the everyone. Some writers like Simona de Wever, उन्होंने अपना वर्क लिखा 1952 में द सेकेंड सेक्स, एंड इन द सेकेंड सेक्स आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग related to second sex. Here Simona de Wever has showed that the women in the society, women are supposed in the second sex and first sex is men. तो इन्होंने एक दिखाया है कि किस तरीके से women को एक रिसेसिव माना जाता है, सेकंड सेक्स का माना जाता है, एंड दिस वर्क इज द सेकंड सेक्स एंड इट्स वेरी फेमस वर्क बाय सिमोना द वेवर. नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात की गई है 1917 में. वर्क लिखा था केट मिलेट ने. केट मिलेट का वर्क है सेक्सुअल पॉलिटिक्स and this was written in 1970s. Under these influences, the women writers have to successful attempt to the break those literary and social norms of the past. Break out the literary means what, and social norms that when anyone is educated and get any job and stand up on their own feet, so definitely she can challenge the privilege norms and social norms of the society. Against में वही जा सकता है that she have a power of which kind of power of economic independency and earning, basically if I am talking about it. So जो अपने पैरों पे खड़ा है, जो earning कर रहा है, जिसका education level अच्छा है, that only that guy, that girl, that women can expose or you can take action. किसके एक्शन लेना है उसको, the nonsense rules that made by men or the society towards women. At the outer writer like Kamla, Anita Desai, Shashi Deshpande, Shobha De and Bharati Mukherjee are the some other and designers short of the feminist bias. These are the writers only write on the feminist bias. What is the meaning of feminist bias on their writing? The difference between the masculinity and feminism. जब बात फेमिनिज्म की होती है तो the post independence era and the pre independence era of Indian writing or the Indian society also, that women are suppressed by men or by the society. So आपने भी कभी सुना होगा अपनी दादी या आपकी मम्मी से, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ऐसी नहीं थी जैसी प्रेजेंट टाइम पे चलती है.
सप्रेस्ड किया जाता था, जो सोसाइटी की सिचुएशन थी. एनी राइटर कैन राइट द टेक्स्ट. सो बेसिकली इफ़ इट्स इन टोटली फिक्शन, कई कैटेगरीज होती है, लाइक टोटली फिक्शन हो सकता है, एंड इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन and is based off their past experience. So writers like the Simona de Beauvoir wrote the work The Second Sex in 1952, have mentioned the how women are in the form of second sex. And some modern writers of some Indian writers like Anita Desai and Shashi Deshpande, Shobha Debharti and Bharti Mukherjee are some Indian writers that wrote feminist bias in their writing, and depth analysis prove a strong feminist intent for the women issues pertain to be chief concern of the pilot. So these are the changes. Firstly, we have discussed post-colonial writing. After that, rising of post-colonial era and the themes की अगर हम बात करें तो themes को work को हमने डिस्कस किया. दैट बेसिकली इंगेजिंग थीम्स की बात करें तो उसमें आपके क्या आ जाती हैं. अभी थीम्स को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले की पीरियड को बात कर लेते हैं. मार्जिनलाइज पीपल, विडोहुड और विडो रीमैरिज की बात करते हैं. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मत को डिस्कस किया है. एंड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा राजमोहन वाइफ का जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1864 में, उसके बाद राजा राव के वर्क को गांधीज़म और नेशनलिज्म देखने को मिलता है. और ये क्या एक्सपोज करते हैं? सोशल इवल, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, राइट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, bond and bondage of their novels on the one hand. After that post independence era में चीज़ें थोड़ी सी बदली. वहाँ पे मुल्क राज आनंद जी ने अपना अनटचेबल लिखा जो कि कास्टिसिज्म से रिलेटेड है. कुली और लिव्स एंड बर्ड ये सब लिखा. उसके बाद वीमेन राइटर्स की बात होती है तो वीमेन राइटर ने जो जैसा फील किया उसने वैसे लिखा. जो कुछ फॉरेन राइटर की अगर हम बात करें, इंडियन फिक्शन को भी लिखा गया, कुछ फिक्शन भी था, बट मोस्ट ऑफ द वर्क आर बेस्ड ऑन रियलिटी. सिमोना दे बीवर का वर्क था, क्या था? द सेकेंड सेक्स. उसके बाद कैट मिलेट का वर्क सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो कि 1970 में पब्लिश हुआ. एंड आफ्टर दैट सम अदर इंडियन राइटर्स लाइक कमला, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, शोभा दे एंड भारती मुखर्जी, इन्होंने भी सेम चीज़ को फेमिनिस्ट बायस को एक्सप्लेन किया अपने वर्क में विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोज पोइट्री एंड नॉवेल फिक्शन वर्क. सो ये जो वर्क है आपका वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो इंडिया का वो ख़त्म होता है मेरी तरफ से, और ये चैप्टर भी साथ के साथ ख़त्म होता है. मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में.